हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। Good evening, friends. A very warm welcome to all of you. We are again back with our FB live session, and today we have a very close friend and a leading physician and cardiologist at Tulip Hospital, Sonipat, and Secretary of the CSI Chapter Haryana, Dr. Anurag Arora with us. I am Dr. Sandeep Diwan, and today we'll be discussing a topic which has actually become relevant in the past few months because we have heard a lot in the media about young people dying because of sudden cardiac death. And today only we had the tragic news of Mr. Raju Srivastava being no more, who was admitted at AIMS and had a sudden cardiac death. So he was revived, but unfortunately today he is no more. So Dr. Anurag, welcome to the FB Live session. Thank you, Sandeep. Thank you, sir. Thank you for coming on our session, sir. I just wanted to ask few questions which are relevant for our physician colleagues as well as for the general community. If you can tell, sir, what is exactly sudden cardiac death or sudden cardiac arrest? See, sudden cardiac death has 4 issues. 1, death has to be natural. 2, it has to be sudden. Sudden means the patient was alright, say 2 hours back, 1 hour back. That means 1 घंटे के अंदर if the patient goes, it is sudden. So there are 4 components. 1, it is sudden. It is unexpected. You don't expect this patient to die. It is rapid, and the cause is cardiac. So the only 4 things which you need to cover sudden cardiac death is 1, it has to be rapid, but it has to be fast. It has to be sudden. It has to be unexpected, and the cause has to be cardiac only. This is sudden cardiac death. Okay. So सर, जैसे हमने काफी न्यूज में सुना है कि यंग पेशेंट्स हैव डाइड, कुछ लोग ट्रेडमिल करते करते पीपल हैव कोलैप्स्ड व्हाइल वॉकिंग. तो क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं सर सडन कार्डियक डेथ? ऐसा क्यों हो जाता है? जैसे यंग लोग हैं जो हेल्दी हैं, जो इवन रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, नॉर्मली एक धारणा होती है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको हार्ट डिजीज नहीं होगी. तो ऐसा क्या रिस्क फैक्टर रहते हैं जो लोग इग्नोर कर जाते हैं सडन और ये सिचुएशन आ जाती है? See, absolutely right. In fact, the studies show that 2/3 of the patients, they have sudden cardiac death as the first event only. So it is the first event in their lives. Second, it hits only young patients who are relatively in the middle age group, 35 to 50, for 35 to 40. That is the maximum age when it hits. See, regarding the risk factors, they remain the same. For all cardiovascular disease, वही risk factors हैं. 1, smoking. 2, diabetes. 3, hypertension, obesity, sedentary lifestyle, done, and then the other factors being which are non-modifiable. That means your hereditary, your genes, and your age. So we have modifiable factors which are smoking, stress, obesity, diabetes, control your blood pressure, and we have non-modifiable factors. See, it is more common in Punjabi community, the hereditary, and then the age. So these are the main 7 factors which, if you have these risk factors, you are high risk to have sudden cardiac deaths. So, taking a cue from your theory for risk factors, now when do you think a patient should see a doctor? Because ये जो आपने comorbidities बताई डॉक्टर अनुराग, I think post 35 more or less everybody would start having any one of those comorbidities. So what can we do to prevent? We know that, let's say, I'm sure a lot of our colleagues are in that risk factor age. तो क्या करें जिससे कि वो इस टाइप की सिचुएशन में ना पहुंचे? The classical triad which we say, which is called as prodrome. Prodrome means कि आपको sudden cardiac death होने से पहले कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ आपको होगा. So the triad of cardiovascular disease, या तो आपको चलने पे सांस चढ़ता है, which we call as dyspnea on exertion या breathlessness, या आपको chest pain होता है, या आपको palpitation होता है. तो these are the main symptoms जो heart से related हैं, जो which are called as triad and which are called as prodrome. So if you have these symptoms, you must go to the doctor first and get yourself investigated. That then those patients
देयर इज अ सबसेट ऑफ पेशेंट्स जिनको पहले से ही पता है कि उनको सडन कार्डियक डेथ हो सकता है, लाइक जिसको पहले एमआई हुआ है, दिस दो पेशेंट जिनको हार्ट का मसल कमजोर है, जिनमें एलवी फंक्शंस अच्छे नहीं है, जिसको हम कार्डियोमायोपैथीज कहते हैं. सो देर आर रिस्क फैक्टर्स जो जो पहले से ही कॉर्नियल आर्टरी डिजीज से सफर कर रहे हैं, दे हैव रिलेटिवली मच हायर चांस ऑफ सडन कार्डियक डेथ, like patients who have valvular heart diseases, like those patients who have cardiomyopathies, those patients who already have current cardiac deaths, those patients का ejection fraction कम है. लोग कॉमन लेमैन पीपल नो कि भैया मेरा हार्ट कम काम कर रहा है, तो जिनका हार्ट कम काम कर रहा है, उनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, उनको सडन कार्डियक डेथ होने का चांस और ज्यादा है. सो दे मस्ट सी द डॉक्टर as soon as possible so that they can be given drugs to prevent it. Fine. So that means a regular follow-up with your doctor is extremely important for control of your risk factors. Am I right? Yes. अब आते हैं इसके सिम्टोमेटोलॉजी. आपने थोड़ा प्रोड्रोमल के बारे में बताया कि चेस्ट पेन, डिस्नी ऑन एक्सर्शन और ऐसे स्वेटिंग होगी या लाइट हेडेडनेस. क्या किसी भी ऐसे सिम्टम को लोग जनरली सोचते हैं कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, ये गैस हो सकती है. हमारे पास आपको पता है कितने पेशेंट्स आते हैं, ये गैस हो सकती है, मैं 2-3 तक एंटासिड खाता रहा, नहीं ठीक हुआ, फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं. आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसे सिनेरियोज होते होंगे रोज. सो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि भाई क्या डिफरेंशिएट आम आदमी कर पा सकता है कि क्या ये चेस्ट पेन गैस से है या हार्ट से है, या उनको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए? सी एनी पेन विच इज अबव द अम्बिलिकस, मतलब धुन्नी से ऊपर है और जॉ से नीचे है, with or without relation to arm, if you have a risk factor, there's a high chance of it being coronary artery disease. हम coronary artery disease क्यों डिस्कस कर रहे हैं? Because coronary artery disease, जिसको हम आर्टरी में ब्लॉकेज कहते हैं, that is the most common cause for sudden cardiac death. In fact, if you have coronary disease and the plaques get ruptured and the artery gets occluded, so जो area of myocardium है उसमें इतने changes होते हैं स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट्स के, उसकी वजह से अरिथमिया होकर सडन कार्डियक डेथ होता है. So if you can recognize कि coronary disease patient को है, तो sudden cardiac death can be avoided. One, so भगवान ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है, भगवान will give you a warning. साला आपने इग्नोर करा तो आप फंसे. That means you will have something. आप उसको गैस कह लीजिए. You may take it as in a positive way कि मेरे सिर्फ acidity है. So any pain from umbilicus to jaw, and if it is not relieved and you still feel you have a risk factor, you must go to the doctor. Doctor also may, even if the ECG first is normal. See, ECG will tell you only after attack हो चुका है. उससे पहले we have a battery of tests which can be done to show कि coronary disease है कि नहीं. Like a treadmill test, like a CT angio, like a Holter test, like a echocardiography, which will tell you about the valvular diseases. So we have a lot of battery of investigation which are available to find out whether you have a heart disease or no. And all types of heart diseases. हार्ट के अंदर क्या है? हार्ट के अंदर मसल है, मसल की डिजीज से भी हो सकता है. हार्ट के अंदर आर्टरी है, वो ब्लॉक होगी तो भी हो सकता है. हार्ट के अंदर कंडक्शन सिस्टम है, उसकी अबनॉर्मलिटी से भी सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, और वाल्व रुकने से भी डेथ. और फॉर ऑल दिस थिंग्स सिम्टम्स आर इंपॉर्टेंट, एंड डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट. सो डू नॉट इग्नोर द सिम्टम्स इफ योर एज इज ओवर 35. And if you have another risk factor like smoking, diabetes, hypertension, dyslipidemia, sedentary habits, obesity, or a family history, or the age is in the age group, then you must go and take it as coronary disease. Unless proved otherwise, take it as coronary disease. So that means, to summarize, you are saying कि any chest pain you must show to your doctor and Yes. let him take a call कि whether it's from heart or is from the GI system. Absolutely right. Rather than the community people deciding themselves. दूसरा चीज जो है कि चलिए हमने सब प्रिवेंशन लिए, उसके बाद भी अगर कभी सडन कार्डियक अरेस्ट होता है या आप नियर कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन में आते हैं और ऐसा है, तो व्हाट कैन आप मानेंगे डॉक्टर, इवन एक MBBS डॉक्टर या जूनियर डॉक्टर के भी बस में नहीं होता ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करना. इट इज नॉट ईजी. अगर आप कम्युनिटी में बैठे हैं, छोटे क्लिनिक में बैठे हैं, ठीक है, तो कम्युनिटी वाले डॉक्टर्स के लिए या हमारे जनरल फिजिशियन फ्रेंड्स के लिए आप क्या सलाह देंगे अगर इस टाइप की सिचुएशन में वो आते हैं
तो इमरजेंसी में वो क्या कर सकते हैं ताकि पेशेंट नियर अरेस्ट से कार्डियक अरेस्ट में ना जाए? डन सी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अवेयरनेस। एक्चुअली में अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनफैक्ट यूएस वगैरह में तो बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर दिया गया है, पुलिसमैन को, गार्ड को, ड्राइवर्स को, और इनफैक्ट जो मॉल में काम कर रहे हैं, दे हैव बीन ट्रेन्ड फॉर टू रिवाइव द पेशेंट्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट. सो द मैनेजमेंट डिपेंड्स अराउंड 5 थिंग्स. One is to identify इसको अभी अरेस्ट हुआ है. That is you. Then that is the initial response. Second is shout for help. Go and dial the ambulance. Suppose you see a patient जो अभी collapse आपके सामने कर रहा है. The first thing is make sure कि सब कुछ safe है. The scene is safe. Then you inform the ambulance कि यहाँ पे. Then after informing the ambulance, then comes the role of BLS. So you have been training people in BLS and advanced cardiac life support. So you must, everybody, every person, every citizen of India should be trained in BLS. And you are already taking initiative of training non-medical people in BLS. BLS is a basic life support system in which we have guidelines how to revive a patient, how to give CPR to a patient. Then comes the role of advanced life support, and then his transfer to the hospital and post cardiac resuscitation. So of these things, most important is recognition by a common citizen, by common guard or a common policeman कि इसको cardiac arrest हुआ है. He must shout for help. He must have ambulance number. Third thing, he must be trained in BLS. If he is not trained in BLS, see, and then early defibrillation. In fact, US में or if you go to the airports, they have already implanted this device which is called as AICD, which is called as the automatic AEDs, yes. uh, Automatic external defibrillators. Yes. Automatic external defibrillators. So AED is called as AED, automatic external defibrillators. So these are available. They will, once you put it on the patient, they will sense whether the rhythm is shockable, whether we can cardiovert the patient, whether the patient can be revived. So and defibrillation is the most basic, most important step to revive a patient of sudden cardiac death. So we must educate the community to diagnose sudden cardiac death. We must train them in BLS. We must train them how to use an AED, external automatic defibrillator, and then their transport, then shorting for the ambulance. So all the points are important in managing sudden cardiac death. It is not, doctor is not available everywhere. You are not available everywhere. Your 40th ICU is not available everywhere. So the common man should know how to diagnose, how to do a BLS, how to inform the ambulance, how to use an AED, and then the hospital people will take care post cardiac arrest. No, thank you, Dr. Very informative. जो अगर मैं समराइज करूं तो आई एग्री विद यू, एयरपोर्ट्स पे AED डिवाइसेस लगी होती हैं. और अगर हम सिंगापुर का एग्जांपल लें या यूएस का एग्जांपल लें तो वहाँ 12th क्लास के करिकुलम में ही एक ले रेस्क्यूअर CPR करके एक चीज़ आती है. भाई आप डॉक्टर नहीं भी हैं तो भी आप किसी की जान कैसे बचा सकते हैं. देखिए, डॉक्टर हर जगह नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी आम आदमी को अगर थोड़ा सा भी बेसिक ऑफ लाइफ सपोर्ट, जैसे डॉक्टर अनुराग ने बोला, वो आता है, तो आप कभी ना कभी अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए, अगर आप अपने जीवन में एक लाइफ भी बचा पाएँ, सो इट इज़ वर्थ इट. सो डॉक्टर अनुराग, बिफोर आई क्लोज द FB सेशन, एक आपसे आखिरी कमेंट कि आप हमारे कम्युनिटी को और अपने जनरल फिजिशियंस GPs को क्या एडवाइस देना चाहेंगे रिगार्डिंग सडन कार्डियक डेथ? Thank you, Sandeep. I must thank your system to give us the opportunity to be here. And regarding the message you have already given. See, if we have history, if we have studying, we are studying Akbar, Shah Jahan, which we are not concerned. Why don't we study BLS and ACLS? See, when we did our MBBS, in fact, you were with me only. You were not trained in BLS. We didn't know ACLS. We didn't know how to give compressions. Now the system has evolved, and if this can be included even in colleges, and if you, with your next ICU and with the reach you have in the community,
we can educate people for this BLS. In fact, we have kept a program. This World Art Day, we're going to teach the police people this BLS, and so we are trying to get mannequins, and we are going to teach the community and especially the police people in the Sonipat area how to do a cardiac compressions and how to do a BLS. So if we can just by propagating these three messages, everybody should know BLS. Everybody should know cardiac compressions. Everybody should know how to inform the ambulance. And everybody should know the nearest ambulance and the hospital. We can save a lot of people. We can save a lot of people. The incidence is not less. In fact, in US, they say 3 लाख लोग, 3 से 3.5 लाख लोग सडन कार्डियक डेथ से हर साल मर जाते हैं, which is a quite a big number. 3.5 लाख लोग अगर यूएस में मर रहे हैं, this a big disease. It's a big disease. Or unexpected, it's a huge loss to the community, to the family as well. तो अगर मैं यूएस के डेटा को सर एक्स्ट्रापोलेट करूं, यूएस की पॉपुलेशन है 33 करोड़ और हमारी है 130 करोड़, तो हम 4 गुना हैं. सो अगर हम, तो दैट मीन्स हम, our cardiac death, sudden cardiac death would be nearly 10 to 12 lakhs every year. Per year, Sandeep. But then the other thing which is to be taken into account, we are more prone to have coronary disease. So this risk factor is more in us. So ये 10-12 लाख से नहीं है. I don't have the data, but at least 12-15 लाख के ऊपर होगा if we take this one. So they say 10 to 12% of the general population are exposed to sudden cardiac death. And then this is the first event. आपको पता भी नहीं होगा कि आपको heart disease है, suddenly you will die. You will die. That's the catch. That is the importance of this session. That you must realize that sudden cardiac death is. Abhi we heard of KK. KK was a singer. He died suddenly. Have you just quoting Raju Srivastava? So they are young people. They are not under any kind of stress. अब जो दुनिया को हंसा रहा है वो ही सडन कार्डियक डेथ से मर रहा है, तो you can expect anything from anybody. Thank you very much, sir. Dr. Anurag, it was really informative and thankful. With this, we'll close our FB session. Maybe we'll be able to invite Dr. Anurag again for another session of cardiovascular diseases prevention. It will be an honor, Sandeep. It will be an honor. Thank you, sir. Thank you very much. Please take a good night, and thanks everyone for joining. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Tulip Hospital, Sonipat, orthopedics and joint replacement, ligament fracture, joint replacement, sports injury, arthroscopy, knee replacement, hip replacement. Dr. Gagan Kansal, orthopedic and joint surgeon, MBBS DNB Ortho. For more information, please contact 705651111. मेरे इस कार्यकाल में 5 साल के में मेरे गांव का बड़ा अच्छा सहयोग रहा, बेहद उनका मेरे ऊपर शान है, जैसे 36 बरादरी ने मेरा सहयोग कराया है. लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. धन्यवाद.